साध संगत मोई पाई, बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोई पाई, सब मेर बरा प्रभु एको, पेक पेक नानक बिगसाई, सब मेर बरा प्रभु एको, पेक पेक नानक बिगसाई, बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोही पाई, बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोही पाई। Okay, sure. We'll start with the question answer section. There are lots of questions. So I don't know if we'll be able to cover all of them. बहुत सारे सवाल है बाबा जी. तो थोड़े मोबाइल पे भी आए हैं अलग अलग जगह से. तो एक सवाल में ये, when the masters leave the worldly plane, often disciples, after passage of a few decades, lose the love of attraction of the master as compared to when he was alive. Under the circumstances, meditation, particularly dhyan, becomes difficult. Can Simran restore that love, attraction and awe for the master felt as before? What all can Shishya do to restore that? तो जब गुरु चोला छोड़ देते हैं, कई बार उनके शिष्यों को वो प्यार, आकर्षण और उनका रौब, श्रद्धा भरा भय कुछ दशक बीतने के बाद कम हो जाता है, जो उनके जीवन काल में महसूस होता है. ऐसी स्थिति में अभ्यास में ध्यान जमना मुश्किल होता है. तो क्या गुरु के दिए 5 नामों का नित नित सिमरन करने से शिष्यों के मन में पहले जैसा अनुराग, आकर्षण व गुरु प्रति भय की अवस्था फिर जाग जाएगी? शिष्यों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है. काफी लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि महाराज शारीरिक रूप से दूर हो जाने के बाद में धीरे धीरे लोगों के अंदर जो पहले प्रेम प्यार था वो कम होते जाता है. और ज्यादातर कुछ लोग तो दुनियावी कार्य इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं और सत्संग, भजन सुमरन की तरफ ध्यान कम देते हैं, और इसीलिए हमें बहुत रूखा फीका महसूस होता है. अगर हम जैसे उनके समय में भजन सुमरन प्रेम प्यारे क्या था कि उनका समागम मिलता था, जाने से दर्शन और फिर सत्संग सुनने से हमारे कुछ कर्म करते जाते थे. हालांकि वो लाभ तो अब नहीं होगा, लेकिन आपको प्रेम प्यार ऐसे ही बनाए रखना है तो सुमरन भजन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि रोज रोज 2.5 घंटा बैठक बनाना और सुमरन जो भी महात्मा मौजूद है उनके पास जाते रहना. This is a good question. Many disciples face this issue that their master has
left his physical body, and a few decades have passed. And at the time when he was there, they were meditating, they were getting prasad from him, and with his darshan, a lot of the karmas were getting redeemed. And he was, they were continuously meeting him or seeing him. So definitely there was better attraction, and one could more easily contemplate on the form of the master and do the Simran at that time. But as the time has passed, two things have happened. One is the bhajan Simran has reduced. So that is one of the causes why we are not able to contemplate on the form of the master well. And the second is that we have got all more outwardly focused and less focused on the master. So for a disciple, it is important that he sits for 2.5 hours of meditation. He does his bhajan simran, and that form of the master will reappear within. And they should take opportunity of going to any other living master, and they should stay in the remembrance of their own master, but take the help and sit there, and there they can continue with the practice of bhajan simran. There are some general questions which are similar, so I will skip those questions. Kirpal said service is like money on the, I can't read that word, but on the on the bend. And Sanji said that you leave 1,000 important works and do your meditation. How do we decide what is more important to do, the meditation and when we should do seva? तो कृपाल सिंह जी कहते थे सेवा आने में आना है, पैसा रुपया में रुपया है, और संजी कहते थे 1000 काम छोड़ो और ध्यान में बैठो. तो इसमें सेवा कभी करना चाहिए और ध्यान कभी करना चाहिए, ये इसका कैसे डिसाइड करें? दोनों बात ठीक है, क्योंकि सब संत महात्माओं ने बार बार सत्संग में दोहराते रहे कि सेवा जो है भजन से कम नहीं है. तो जब आप भंडारे में जाते हैं, संतों के समागम में जाते हैं, तो वहाँ आश्रमों में भी वहाँ सेवा चलता है, तो वो सेवा में आप भाग ले सकते हैं, सेवा कर सकते हैं. सेवा संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है. तो सेवा प्रेम और प्यार से करे तो रुपए में रुपया फायदा है. हमें किसी की निंदा चुगली करते हुए, किसी पे द्वेष रखते हुए, मन में बुरा भावना रखते हुए सेवा नहीं करना चाहिए. और भजन सुमरन भी उतना ही जरूरी है. अगर हम दूर हैं, सेवा में नहीं जा सकते, तो हम ज्यादातर तवज्जो भजन सुमरन की तरफ दें, तो वो असली सेवा है. तो वो भी सेवा से कोई कम नहीं है. तो संतों ने दोनों तरफ की बातें हमेशा जोर दिया है कि सेवा और भजन सुमरन से दोनों समान है. Both bhajan simran and seva are equally important. When we go and attend programs or we go to the ashrams, we get an opportunity to do seva, and we get an opportunity to do service of fellow sevadars or fellow satsangis. That is as good a seva of the master. So if we do it lovingly, without any jealousy or without any ill feelings towards others, then the seva that we do there physically in the ashrams or in the programs, that is like a rupee for a rupee kind of
benefit that you get by doing that kind of seva. And similarly, bhajan simran is equally important. And when we are especially away from the ashram or away from these programs, we are at our homes, then doing bhajan simran is as good as seva. In fact, bhajan simran is seva of the master. So by doing bhajan simran, we are doing seva. So that way, the masters emphasize on both these measures, and both these are equally important. क्योंकि सेवा 3 तरह की होती है, तन, मन, धन। तन की सेवा तो हम गुरु के स्थान पे जाके कर सकते हैं, और मन की सेवा, मन को भजन सुमरन से जोड़ के रखना, सुमरन से, वो मन की सेवा है, उसे गुरु बहुत खुश होता है। और हालांकि काम हम अपना करते हैं, लेकिन वो दया करता है। और धन की सेवा, जो तन और मन की सेवा नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग कुछ धन की सेवा कर देते हैं। जो गुरु के दरबार में धन की सेवा करते हैं, तो गुरु क्या करता है, उसे परोपकार परमार्थ में ऐसी वैसे बिल्डिंगें संगत के लिए और भंडारे में खाने पीने के लिए लोगों के खर्चा करता है, तो वो धन सार्थक होता है। There are three types of seva. There is the seva of the uh, physical, the tan, man and dhan. So tan is body, the seva that we do by physically helping or physically giving our service to in the programs or in the ashram or elsewhere. The other is the mind, the seva of the mind. Seva of the mind is where we do our meditation, we do our bhajan simran, and we spend time in the remembrance of the master. Though that is something we are doing for our own self, the master gets pleased with that seva and he likes that seva. So therefore, bhajan simran is a seva that we are effectively doing and pleasing the master. And the third is where we are not able to do the physical seva. People give some wealth, give some donations to the ashram, and they help in a monetary way. And the master then uses that monetary that money which is given as seva in helping the sangat, either by constructing some buildings or by for langar or for other help that is given to the sangat. So these are the three means of seva that are there. Many of us here are initiates of Sant Ajaib-Singhji who have only come to you recently. We have spent decades without the love of the living master. I believe it was Kirpal who said every Param Sant has at least one perfect disciple, sometimes more. More is the case with as with the case of Savan. Sanji often told a story of how his soul shook when Kirpal Singhji uh, gave him the order to continue his mission. It seems that sometimes successorship is easy and transparent, but other times it comes with some trials, and often it takes us jivas years to locate a successor. My question is, why is this such a complicated process? Uh, could Savan, Kirpal, Baba Somnath ji, and Ajay not have uh, could have simply announced to the Sangat who their perfect disciple was and save us so many years of suffering? बाबा जी, आपके इधर आने को हमें बहुत साल लगे हैं। हम
नाम लिया है संजी से, कृपाल सिंह जी से। तो इतने साल हम ढूंढते रहे एक गुरु का, एक पूर्ण गुरु के। तो जैसे सावन सिंह जी महाराज के एक या दो या तीन सच्चे शिष्य थे जो गुरु बने, कृपाल सिंह जी के थे, वैसे सोमनाथ बाबा जी के थे। तो ऐसा क्यों है कि हमें इतने साल लगते हैं ढूंढने में, कि ये सिंपल प्रोसेस क्यों नहीं होता कि गुरु बता देते हैं कि ये हमारे सक्सेसर है, आप इनके पास जाओ। तो इतना टाइम सबको फिर ढूंढने में चला जाता है, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। नहीं, बात ठीक है। ऐसे प्रश्न काफी लोगों के अंदर आते हैं। लेकिन गुरु कहते हैं कि वो चमत्कार नहीं बताता है, वो मालिक की मौज में रहता है। और जीव कुछ भटक जाते हैं और उनको फिर से उस जगह पे आने में देर होती है, जरूर होती है। और कुछ लोगों को क्या होता है कि भरोसा नहीं आ पाता है और भरोसा आने में टाइम लगता है। तो इसीलिए, और फिर भी जानकारी होता है, क्योंकि संगत काफी दूर दूर तक महाराज जी की है और वहां तक समाचार नहीं पहुंच पाता है, और संगत को थोड़ा इस समझ आने में देर हो जाती है। और फिर ये सब उस मालिक के हाथ में है, जब वो मिलाना चाहता है तो वही दया करके फिर से मिलाता है। So it is true, this is a question which lots of satsangis have, but saints seldom show miracles, and they live in the will of their master and the will of God. So it does take time. Sometimes it takes longer for us to realize who the living master is. Many times the name is not known, so even though the living master is practicing somewhere and explaining the teachings, but since the sangat is so spread out, they for it takes time for the news to reach them and for them to come into the fold and make the most of it. And actually all of this is within God's will, and when He wills it, we come in the company of the living master. So it is all happening according to His will. सब मालिक के हाथ में है, किस समय वो किसको फिर से मालिक से मिलाना चाहता है। होता है बीच में, हमारे जो है कुछ कारणवशात हम दूर हो जाते हैं, लेकिन जब उसकी ही कृपा होती है तो जीव फिर कोई महात्माओं के शरण में आता है। So it is according to the will of God to get us in the company of the living master of that time, and many times we do get a little swayed away from the path, and it takes us time for us for getting back on it, but all that is according to the will of God Almighty. महाराज अजैब सिंह महाराज जी अपने समय में ही सत्संग करने का हुक्म दिया था, और उन्होंने ही हमें आंध्रा में भेजा था, और उनके हुक्म से ही हम आंध्रा के पहाड़ियों में जाके बैठे, और उनके हुक्म से ये सब चल रहा है। तो कहते हैं कि उन्होंने दिया था, और बाद में वो जाने के बाद में ये विदेशी संगत बेरनार, फ्रांसवाइज और कुछ लोग हमारे पीछे पड़े कि आप विदेश में भी आओ, और वहाँ पे बहुत सारी संगत है और आप वहाँ भी सत्संग करो। लेकिन मेरा कोई ख्याल बाहर जाने का नहीं था और मैं बाहर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए 7 साल वो हमारे पीछे पड़े, बहुत अलग अलग विदेशी लोग। यहाँ तक कहे कि बहुत गरीब संगत है, फॉरनर्स में भी संगत में भी बहुत गरीब संगत है, सब यहाँ नहीं आ सकते, उन सबको फायदा मिलेगा, और हम जो यहाँ किराया दे के इतना दूर आते हैं वो आपकी सेवा में दे देंगे, तो कहते उन सब का भला हो जाएगा। तो लेकिन हमारा ख्याल नहीं था, हम नाकारते गए, क्योंकि मेरा कोई बाहर जाने का ख्याल नहीं था।
और हम जाना भी नहीं चाहते थे। तो इसीलिए बाद में 7 साल के बाद में फिर वो लोग ही आना चालू हो गए। अब उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था बनानी पड़ी। So it is not that the saints don't say it out. In fact, Sanji asked me to come to Andhra. In fact, he ordered me to come to Andhra and Karnataka and bring the help the Sangat here. So it was only on his orders that I came back into Andhra Pradesh and explained the teachings to people and helped the Sangat. So, so in fact, there were about 5 to 7 foreigners also who have been coming very regularly right from the beginning. And in fact, they asked me many times to do satsangs, go abroad and do satsangs. And though I never had I had never wanted to go outside of India, and therefore I never agreed to do that. And they would keep saying there were so many people who kept telling me to go outside, but then I did not want to do that. I never thought of that and never wanted to do that. They also offered me and told me that the sangat outside is there are a lot of people who cannot afford to come to India. So if you are coming there, instead of giving seva, we can pay for your visit and travels there, and then those people can benefit. But that was not never on my mind, and I decided to continue to stay within India. And now there are several foreigners who are coming and visiting here, and all this is this facility, this ashram has been created so that everyone can come here and benefit from this. So it is not that the masters don't inform, that also happens. बाबा जी, महादेव अप्पा के बारे में आप जरा बताएंगे? कैन यू गिव टॉक अबाउट महादेव अप्पा बिट? वो बड़ी लंबी कहानी है, वो बताएंगे टाइम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर रह जाएगा। कैसे? दूसरे टाइम बता। ठीक। In which plane do we manifest the radiant form of the master, astral or parbrahm? In which is the 10th door? तो हम गुरु को अंदर प्रकट कहाँ करते हैं? 8वें मंडल में या पारब्रह्म में? और 10वां द्वार जो बोलते हैं वो कहाँ पे है? 10वां द्वार ऐसे बारिश साहब के दोनों आंखों के बीच में जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं, रूप शरीर शून्य हो जाता है और अंदर तीसरी आंख खुलती है, तो बारी साहब से इसको 10वां द्वार ही कहते हैं, लेकिन संत मत के अनुसार से 10वां द्वार पार ब्रह्म है। So there are 9 openings to the body. That way, the 10th is the third eye. When that opens, we say that we have come to the 10th door. But in Santmat, the 10th door is referred to the access to the Par Brahm. That is the 10th door. और हमें गुरु का दर्शन जो है वो 8वें के नीचे ही हो जाता है। और जब हमारी तीसरी आंख खुलती है, हमें आत्म दर्शन होता है। आत्मा यहाँ बैठा है, आत्मा दिखाई देता है, शब्द और प्रकाश रूप में आत्मा यहाँ है, बिंदी के रूप में, तो आत्मा नजर आता है। और उसके बाद में जो बाहर आकाश है हमारे अंदर में भी है, हमारी रूह आकाशवत होती है, आकाश में जाती है, तो सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, नक्षत्र मंडल पार करके गुरु का दर्शन होता है। तो वो 7 के ऊपर थोड़ा सा 8 के नीचे गुरु प्रकट होता है। So the darshan of the master, we get the darshan of the radiant form of the master below the 8th level.
when we get out of the 9 doors and come to the 10th door, that is, we open the third eye, there first we see our own soul, which is in the form of a round light and sound. It is a small round shape. That way, it doesn't have any form, it is just of light. And we first see that. And just like we have a sky outside, you see the sky outside, there is a sky within us. So the soul starts ascending into that sky. And when it ascends, it crosses the sphere of the sun, and it crosses the sphere of the moon and the stars. So when it crosses these three spheres, it manifests the radiant form of the master. He comes before the eighth plane. So just below the eighth plane and above the seventh plane, we manifest the radiant form of the master. और गुरु का दर्शन हो जाता है और गुरु ही हमें ऊपर लेके जाता है. And there we have the darshan of the master, and then the master, the radiant form of the master, takes us higher up. वो आठवें मंडल पे ले जाके ज्योति का दर्शन करा देता है और अनाद नाद वहां प्रकट हो जाता है. He takes us and first gets us to have the darshan of Jyoti, and after that he manifests the holy sound current within. Please describe us the usual daily life of a soul in the astral and causal planes. How their life and environment looks like. Is there a difference between life of initiate or non-initiate? बाबा जी अंदर एस्ट्रल आठवें मंडल में और ऊपर ब्रह्म में सर्वसाधारण जीवन कैसे रहता है? जैसे हम सत्संगी अंदर जाते हैं और बाकी सब होते हैं, सबका जीवन एक से जैसे होता है या अपना कुछ अलग रहता है, उनका कुछ अलग रहता है? तो आप थोड़ा एक विस्तारित बताइए कैसे जीवन रहता है. हाँ, वहाँ पे भी बहुत पहले से वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं रहती हैं और वो यहाँ जैसे दुखी नहीं है, वो सुखी है. वहाँ पे उनको जो है कि कोई भी भक्ति करके या प्राणायाम साधन करके भजन करके ऊपर गई होती हैं तो उनके अंदर तपस्या का पावर होता है, वो निर्मल होती है. तो उन्हें कोई प्रकार का ये स्थूल है, वहां सूक्ष्म शरीर है और ब्रह्म में कारण शरीर है. जहां तक शरीर है वहां तक बंधन है, आना जाना है, ब्रह्म तक भी आना जाना है. और उसके आगे पार ब्रह्म में जाके आत्मा मानसरोवर अमृतसर स्नान करके निर्मल होते, तब आना जाना खत्म हो जाता है. So there are souls inside. When we go within, we see the souls inside, which are there in the astral and the causal planes. These are souls which have gone within by their power of either pranayams or by their devotion or other practices. They have gone within, and they are very pure souls that are there in these two planes. But they, so long as they are in these planes, they still have a body, they still have a covering, and that covering is only free when we cross the Parbram. तो कहते हैं कि वहाँ के तो जो लोकल हैं वो अलग रहते हैं, संतों का अपना सुख स्थान अलग होता है, वो अपने जीवों को अलग रख के वहाँ भजन करा के ऊपर लेके जाते हैं. So there also they are all living, and the satsangis, when they go there, the master keeps them at a separate location which is called the Sukhstan, and they reside in that Sukhstan. और वहाँ भजन सुमरन कराते हैं और फिर वैसे ही ऊपर लेके जाते हैं. And there the master makes the souls do their meditation, the jivas do their meditation, and after that they take the jivas further up. जब बाबा जी जीव इस दुनिया में आता है, when there is an incarnation of a soul in this world, then सब प्रारब्ध के हिसाब से होता है कि थोड़ा फ्रीडम भी रहता है उसमें? नहीं, बहुत फ्रीडम भी है.
ये मानव शरीर को परमात्मा ने स्वतंत्र रखा है। प्रारब्ध के अनुसार हम जो कुछ कर्म में बुरा नहीं कर रहे हैं, फिर कुछ तकलीफें आ जाती है, वो प्रारब्ध से आता है। लेकिन इंसान को जो है कर्म के लिए स्वतंत्रता है। ये भक्ति करके, कठिन भक्ति करके, और कहते हैं कि गुरु की शरण में जाके भक्ति करके परमात्मा से भी मिल सकता है, और जब तप करके स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में भी जा सकता है, और बुरे कर्म करके नरकों में भी जा सकता है। तो कहते हैं स्वतंत्रता है। अगर इंसान आगे बढ़ना चाहे और वो मेहनत करे, प्रारब्ध पे ही नहीं छोड़े, मेहनत करे, और मेहनत करके दिमाग लड़ा के इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। आप देखो, जो हमारे कलाम, अब्दुल कलाम, एक गरीब घर में केरला के झोपड़ी में पैदा हुए थे। उनको खाने के लिए भी नहीं था, बाप को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। तो वो बच्चा जब 5 साल का हुआ, पेपर बेच के अपना पढ़ाई किया, और लास्ट तक पेपर बेच के अपना गुजारा किया। और देखो, लेकिन शौक था आगे बढ़ना पढ़ना, देखो कहां से कहां चले गए। आज एक झोपड़ी में पैदा हुआ वो बालक, कहते हैं कि राष्ट्रपति तक गया। माने पहले तो विद्वान बना, वैज्ञानिक बना, आविष्कारक बना, और बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो कहते हैं ये मानव शरीर कल्पतरु है, जो मांगे अपने ठाकुर से सोई सोई देवे। कहते इसमें बैठ के जो भी इच्छा करो वो मालिक देता है। So the life is cast on the pralab deeds. So one's life is cast upon it, and but there is a lot of freedom given to the jiva in this life, and if there is a strong will and there is a commitment to do it, and it is backed by efforts, then the jiva can definitely go far beyond what the pralab has set out for that jiva. We This human life is such that it can be transformed from a human being to God Almighty. So if one uh, makes a strong will and stands committed and does the effort, he can get transformed into God Almighty from being a human being. And like that, there are so many people who do austerities and do other kinds of devotions, and they also get a lot of mystical powers, or they go into higher planes as a result of what they have done here. So there is definitely a lot of free. There is a lot of freedom here. If we see the life of Abdul Kalam, he was the president. He was the president of India. He was born in a very poor family in a hut, and but it was his will and commitment to get educated, learn, and that way, by selling newspaper, by distributing newspapers in the morning, he earned his livelihood to pay for his education, and he completed his education. He became a scientist, and he was one of the leading scientists of India, and eventually he became the president of India. So therefore, you have the freedom. The jiva always has the freedom to do more in his life by commitment and effort. Does the ghost have a soul, or is it only an energetic manifestation? For example, the ghost in Gudela. बाबा जी ये पूछ रहे हैं कि भूतों में जीव होता है क्या, या ऐसा ही एनर्जी रहती है, और जैसे आपके गुडेला में एक भूत रहते थे वैसे? नहीं, उनका भी एक शरीर है, उसको लिंग शरीर कहते हैं। वो 17 तत्व का है। तो वो हवा जैसे वो दूसरे रूप में बना लेते। तो जो इंसान का किसी ने मार दिया, बदला लेने की भावना अंदर रह गई उसके, तो ऐसे भूत प्रेत के शरीर में आते। या एक्सीडेंट अकस्मात हो गया और वो मरते समय ऐसा भावना लेके मरा,
तो ही भूत बनते हैं, सब भूत नहीं बनते, अच्छी आत्माएं। तो हमारे यहाँ तो एक औरत थी जो बावड़ी की खुदाई, गरीब औरत है, पत्थर तोड़ने वाले की, तो वो मट्टी निकाल रही थी बाहर, उसका पैर छटक के ऊपर से नीचे गिर गई, पत्थर थे और सिर फट गया, वो गुजर गई। तो वो वहां बहुत बने थे, तो उसको ले जाके, जो हमने जमीन लिया ना, वो जमीन में एक पेड़ था ना, वो पेड़ के नीचे दफना दिया था वो लोगों ने, गरीब लोग। तो बाद में वो सफेद कपड़ा पहन के शाम को 6 बजे बाहर आती थी, शाम को ही, और घूमती थी वो एरिया में। तो जो जो लोगों ने, गांव वाले ने, सबने देखा है। तो कोई शाम को बाहर निकल के जाता नहीं था, और वो एरिया में डर के मारे खेती करने को भी नहीं जाते थे। So ghosts have a body, it is a body of 17 elements. So it is called Ling, Sharir. So that is, so ghosts do have a body, it's not just energy. And ghosts are the, when someone dies, uh, or someone is murdered and he carries that feeling for revenge, or someone accidentally dies and he carries some feeling while dying. Such beings, such jivas become, get transformed into ghosts. And like in Gudela, they were digging a well. When they were digging a well, this lady who was like a worker there, she accidentally slipped and fell inside, and she died by hurting her head. And she became a ghost. They buried her body just next to the ashram. That time there was just a tree there, so they buried her there. They were poor people, so they just simply buried her nearby. And she used to come out in white clothes, and everyone in the ashram, everyone in the village, Godela village and around, everyone had seen her. So they all knew that she is there and she roams around like that. तो कहते हैं जो मानव शरीर में समय बाकी रह जाता है वो उसमें पूरा कर। So whatever is the residual life left, which is residual life of in the human form, if that residual life is fulfilled by the ghost in the body of a ghost, थोड़ा समय के लिए, and that is only for a short period. एक ये सवाल है बाबा जी, कमिंग टू इंडिया वी सी दैट मोर पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड टेक्नोलॉजी लाइक एवरीवेयर इन द वेस्ट, हाउ बैड इज इट फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट? ये फोन्स वगैरह यूज करते हैं, इनका कुछ बुरा असर होता है क्या अपने ध्यान भजन पे? बहुत ज्यादा होता है। और दिमाग पे भी असर होता है, और उससे आदतें खराब हो जाती है। बहुत बच्चे लोग तो फोन से ही बिगड़ गए, पढ़ाई छूट गई। ऐसे 2-3 लड़के लोगों को हमने देखा, ये फोन जब से आया उसके पीछे पड़ गए। तो सीए कर रहा था, वो भी छोड़ दिया, वो अभी नौकरी भी नहीं कर रहा है, उसी के पीछे बैठा है। तो कहते हैं ऐसे ऐसे बहुत खराब चीज है। फोन नहीं, अच्छी तरह से यूज करें तो कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी है। कितने तो ऑफिस के काम करते हैं इसी फोन के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फोन के पीछे माने कि ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, उससे आदतें खराब होती। So indeed phones are quite detrimental to not only devotion but to general life. People, I've seen so many children in front of me, they get so addicted to their phones that they leave their education. One boy was doing his chartered accountancy, he left that and he just was lost in his phone, and he still continues to do that. He's left his career altogether like that. I mean, devotion aside, there are
people, it is quite disturbing and quite an influence on the mind if one gets addicted to it. But at the same time, it is also a very helpful thing, and there are so many things we can do now in our workplace which we could not do before. That is all being done by the phone. So it is a great handy tool as well. But one should not get addicted and spend all the time on the phone. छोटे बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी आदतें बुरी हो जाती हैं, फिर वो जल्दी छोड़ते नहीं, उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान कम हो जाता है और आंखों पे उसका प्रभाव पड़ता है, उनकी नजरें कमजोर हो जाती है. Small children we should avoid giving smartphones to small children, because uh, they quickly take to it, and they don't pay attention to their studies. It also spoils their eyesight. So, so it is definitely detrimental. ये फोन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है. हाउ डज क्लोज रेंज रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, ब्लूटूथ, वाईफाई अफेक्ट आवर मेडिटेशन और एबिलिटी टू फोकस? तो उसका रेडिएशन फोन का जो है वो हम ध्यान करते हैं, उसमें भी उसका असर होता है. फोन अगर बगल में हो तो, या उसका रेडिएशन हो, उससे कुछ फर्क पड़ता है? और ध्यान के समय फोन बंद करके रखना अच्छा है, क्योंकि उसका संबंध ऊपर इससे रहता है ना, तो होता है हर अंग के ऊपर उसका असर होता है. So the radiation does affect. It is better to switch off the phones when we are doing our meditations. दूसरा सवाल ये है कि I know you said not to do Simran while the master is giving satsang. Should we do Simran during bhajan singing or while Raju is chanting the hymns? तो सत्संग सुनते समय हमें सिमरन नहीं करना चाहिए, ये आपने बताया था. तो अभी राजू भाई भजन बोलते हैं या बाणी बोलते हैं, जब भी गाना होता है तभी कर सकते हैं क्या बीच में? हाँ, भजन बोलते समय अगर सुने तो अभी साथ बोले तो अच्छा है, या तो सुमरन कर चलता है, लेकिन सत्संग के समय थोड़ा ध्यान से सत्संग सुनना चाहिए और उस पर मनन करके अमल करना चाहिए. अगर हम सुमरन करेंगे तो उस पर ध्यान नहीं जमेगा, तो वो हमारे अंदर टिकेगा नहीं वाक्य. So it is okay if you do Simran when the Bani is being or the hymn is being sung by the Bhati ji. But generally, when the masters are saying or talking in the satsangs, it is better not to do Simran and listen very attentively to the masters. Because if we are doing Simran, then we cannot focus on what is being said by the masters, and those words are not then internalized. We do not internalize what is said by the master. We just superficially listen. So whatever is being said, we should listen very attentively and try to internalize what is being said in the satsang. So it is preferable not to do Simran when the master is talking. कहते हैं कि घर में भी हम सत्संग लगाते हैं तो भी हमें चाहिए कि गुरु का ध्यान में बैठ के हम सुने, अच्छी बात है, लेकिन सुमरन करते हुए दो काम नहीं होता है, मन में एक ही काम कर सकते हैं, तो उस समय सुमरन नहीं करना चाहिए, हमें उनके वाक्य पे ध्यान रखना चाहिए. So when we are contemplating lovingly, thinking of the master, we can do our Simran. That is the process of Dhyan Bhajan. But when the satsang is going on, it is better that you pay attention to what he is talking and try to internalize that. So when we are doing Simran, we are not able to then pay that kind of attention on what is being spoken. क्योंकि सत्संग कोई कम नहीं है, सत्संग हम प्रेम प्यार से ध्यान से सुनेंगे तो हमारे बहुत सारे कर्म करते हैं, तो हमें उससे भी फायदा उठाना चाहिए. So satsang is not a small thing. Listening to satsang also
redeems a lot of our burden of karmas, and it is also, it transforms us, so we should listen to that. Beloved Babaji, what exactly the prasad and darshan does to our minds and bodies? तो दर्शन और प्रसाद जो बाबा जी देते हैं, वो उसका असर एग्जैक्टली कैसे होता है हमारे दिमाग पे या हमारे मन पे या शरीर पे? नहीं, होता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। अभी आप जो संतों का दर्शन प्रेम प्यार से करते हैं, तो उनकी दया दृष्टि से आपके बहुत सारे कर्म करते हैं, क्योंकि हमारे कर्म थोड़े नहीं। इस तरह से हम होते होते ही मन की सफाई होती है। और प्रसाद खाने से भी, वो प्रसाद बनाते हैं दया दृष्टि डाल के, तो वो प्रसाद खाने से भी हमारे बहुत सारे कर्म करते हैं। So a lot of our burden of karmas, they are redeemed when we have the loving darshan of the Master. When he casts his glance upon us, then a lot of our burden of deeds, that gets redeemed by his glance. And it is not a small feat, it is not a small amount of burden that we are carrying upon ourselves. We are carrying huge burden of karmas, and this is one way of reducing that. Likewise, when he gives us he gives us prasad with his blessings in the prasad also, a lot of our burden of karmas gets reduced. तो एक बार प्रसाद सेवादार बांट रहा था, सावंत सिंह महाराज बैठे थे, तो किसी प्रेमी ने कहा, महाराज आप अपने हाथ से दो। हाँ, तो सावंत सिंह महाराज कहते हैं कि नहीं बेटा, वो प्रसाद वो बनाया हुआ है, वो प्रसाद ही है, भले वो दे रहा हो। तो बोले नहीं, आपके हाथ से अच्छा रहेगा। तो बोले देखो, हाथ जो है कि हाथ जो है वो श्रेष्ठ है या आंख श्रेष्ठ है? क्योंकि वो संतों की नजर में सब कुछ होता है। यही वो खिड़की है जिससे वो परमात्मा देखता है, जो अंदर वो ताकत प्रकट है, और उसी से वो हमारे कर्म लेते हैं, और उसी से वो दया मेहर करते हैं, हाथ से नहीं आंखों से। तो आंख श्रेष्ठ है, ये परमात्मा के देखने की खिड़की है। So once it so happened that prasad was being distributed, and Savansinghji Maharaj was sitting there. So someone requested him that you please give it with your hands. So Savansinghji Maharaj said that it doesn't make a difference, that is prasad that is being given. So they still insisted that he give the prasad with his hand. Then he said that look, the prasad is not made by the hand, it is made by the vision of the Master, because it is the eyes which are the windows of God Almighty that are giving and expressing their grace through the eyes of the Master. So that is the window with which God Almighty sees you. That is the window with which He showers His grace upon you. So it is the eyes which are important and not the physical hand. Babaji, when you open your eyes and see the world around you, how do you perceive the creation? What do you see? तो आप जब अपनी आंख से देखते हैं, दुनिया कैसी दिखती है, और आपको क्या परसेप्शन है सब? सबके देखने का तरीका अलग अलग होता है। दुनियादार लोग कुछ अपने ढंग से देखते हैं, और कुछ महात्मा लोग हैं, उनकी नजर कुछ अलग होती है, वो अपने ढंग से देखते हैं, तो सबकी नजरिया अलग अलग होती है। Everyone's perception is different. When people see the world and the creation, they have a certain perception and a certain view of life.
So they perceive it like that. And when the masters see, they have a different perception. They look at us differently. In the book Meditations by Kirpal Singh Ji, Babaji tells us that during Simran repetition, we should repeat the 5 names using the tongue of the mind. But when I try to do this, I fall asleep. So my question to Ramsinghji Babaji is, can I start Simran meditation and repetition by using the tongue, and gradually I'll progress towards the tongue of the mind? तो उनके किताब में लिखा था कि हम ध्यान अपने मन से करना चाहिए, मन के जीवा से करना चाहिए, बट वो हम वैसे करते हैं तो सो जाते हैं. तो पहले हम अपने जीवा से कर सकते हैं क्या? हाँ, जबान से कर सकते हैं. पहले जब तक कि आपका सुमरन पक्का नहीं होता है तब तक आप जबान से कर सकते हैं. जब सुमरन पक्का हो जाएगा आपको नींद में भी सुमरन चालू रहेगा और ऐसा, तो वो मन से अपने आप आ जाता है, मन से चलने लगता है. लेकिन पहले जबान से उसको पकाना चाहिए. सुमरन पक गया तो अपने आप जो वो मन से चालू हो जाता है. मन निर्मल होएगा तो मन से चालू हो जाता है. लेकिन मन को निर्मल करने के लिए पहले सुमरन की जरूरत है और जबान से ही करना पड़ता है सबको. बाद में मन से अपने आप होता है. So initially the Simran is to be done by the tongue, and when that gets more perfected, then the mind starts doing the Simran on its own. So even when you're sleeping, it will be doing Simran. So in order to perfect our Simran, it is okay if we do the Simran by the tongue initially, till we develop that perfection with the mind. क्योंकि सुमरन के समय मन दोनों आंखों के बीच में ही, यहाँ ही मन और आत्मा बैठे, इसलिए वहीं सुमरन कराया जाता है. तो वहां सुमरन करने से दोनों आंखों के बीच में जब तक ध्यान टिका है तो मन को दूसरे तरफ जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मन इधर ही है. लेकिन वहां से जब नीचे उतरते हैं ना तो मन भाग जाता है. तो इसीलिए वो क्या होता है, थोड़ा यहाँ सुमरन करने से मन को शांति मिलती है, और मन को जैसे शांति मिलती है तो नींद आ जाता है. When to still the mind, we have to focus at the eye center and do the Simran by the mind. Then the mind gets still. So that is the way to get stillness of the mind. And the mind cannot run here and there when it is focused at the eye center and we are doing our repetition by the mind. But the other side to it is that when the mind focuses at the eye center and does the Simran, then it comes into a very relaxed state and therefore we fall asleep. Whereas if we are doing it with the tongue, the mind is active, it is running all over, but we are doing the repetition. But it will not get still by the tongue. It will get still only when we do the repetition with the mind at the eye center. धीरे धीरे सुमरन से मन निर्मल होएगा तो मन स्थिर हो जाएगा और अपने आप सुमरन मन में चलने लगेगा. So slowly as we perfect the mind and the mind starts doing the Simran, it will start focusing at the eye center and doing the Simran. Then the Simran will also start automatically happening. Babaji, should we give equal time to bhajan and Simran and Dhyan, or should I give 2 hours to Simran meditation and half an hour to bhajan? Bhajan. वो 2 घंटा सुमरन और ध्यान के लिए कहा जाता है, आधा घंटा भजन करते हैं. आँख कान बंद करके शब्द को सुनने की विधि को भजन करते हैं, क्योंकि हमें जो अंदर लाइट है, प्रकाश और शब्द है, उसको देखने सुनने की विधि अलग है, उसी को भजन करते हैं.
So bhajan is the practice where we do the listening of the light and the sound. तो टाइम कैसे? ये ज्यादा करना, सुमरन ध्यान ज्यादा करना, समय ज्यादा देना, इसमें 20 मिनट आधा घंटा के अंदर, क्योंकि जब तक के सुमरन ध्यान से मन निर्मल नहीं होगा तब तक भजन शब्द सुनाई नहीं देगा. So we should give initially more time to do our Simran and Dhyan, because that is how we will be able to still our mind. And when the mind is still, only it will be able to listen to that holy sound current and see the light within. So the faculty of listening and seeing, that can be, we can spend time of about half an hour, 20 minutes doing the bhajan, and about 2 hours or more can be spent on doing our Simran and Dhyan. Babaji ये बोल रहे हैं ओजस is indispensable for meditation, and if humans lose ojas, can we recover it again? तो काम में जो ओजस हम करते हैं, लूज करते हैं, क्या आई मीन वो ध्यान के लिए बहुत जरूरी है, बट वो वापस होता है या एक बार ओजस गया तो वो वापस नहीं आता है? नहीं गया तो वापस नहीं आता. अभी बताते हैं ना, 90 ग्रास खाने से 1 बूंद खून तैयार होता है, और 100 बूंद खून तैयार होने के बाद में 1 बूंद ओजस वीर्य तैयार होता है. हाँ, और फिर वो वीर्य बढ़ के और वो दिमाग पे चढ़ता है, वो धीरे धीरे शरीर से दिमाग पे आता है, तब हमारे अंदर पावर आता है भजन सुमरन में टिकने का और भजन करने का. चाहे ऐसा ख्याल आएगा कि ये पहाड़ भी हम तोड़ देंगे, माने उसमें इतना हिम्मत आता है. तो ऐसे ही सफलता प्राप्त होती है, और वो ध्यान भजन के लिए बहुत जरूरी है. तो वो एक बार खो लिया तो वापस कैसे आएगा? फिर उसको बनाने में टाइम लगेगा, उतना बनने में तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं. So it is said that if we have 100 units of food or drops of food, if we have 100 drops of food, then we make 100 ग्रास तो ज्यादा होता है ना. 100 ग्रास का 1 बूंद खून बनता है खाने का. ग्रास मतलब एक बार हम खाते हैं उसको ग्रास, वही ग्रास है. So 100 bites of food, when we swallow 100 times one food, we make 1 drop of blood, and 100 drops of blood make 1 drop of ojas. So once the ojas is made, that ojas then goes into the mind, and that is the ojas which gives us the strength and gives us that will to do our meditation or do anything, take up any task. So that is the power that comes with chastity. So once we lose our ojas, it is difficult to get the ojas back, because that much, again, food has to be eaten and everything, that whole process has already been lost in that much loss of ojas. ये कर्मों के बारे में थोड़ा क्वेश्चन है बाबा जी. ये पूछते हैं कि if I have money kept with a bank and the bank invests in various things, alcohol, corrupt practices, businesses, etc., will that affect my karma? तो बैंक में हम पैसा रखते हैं, बैंक अगर किसी दारू के बिजनेस को पैसा देती है तो वो कर्म हमें लगता है क्या? नहीं, उससे मतलब नहीं. ओके. वो हम तो अपने पैसे की सुरक्षा के लिए डालते हैं. अब बैंक तो दूसरे को देना ही है. उनको क्या ब्याज चाहिए, तो वो सब हमें देखने की जरूरत है. So it doesn't affect us. We are keeping money there for our security. What the bank does with it is a different matter. So it is not affecting our karmas. दूसरा है कि दोस्तों को हम पैसा देते हैं या लोन में, या उनको
गिफ्ट जैसे देते हैं, हाँ। वो कर्म करते हैं उससे, तो उसका हम पे असर होता है क्या? हाँ, वो थोड़ा देख के देना चाहिए किस चीज के लिए ले जा रहा है। हाँ, वो सब थोड़ा विचार करके देना अच्छा रहता है। So if we are giving a loan or gift to our friend or someone, we are either lending or giving money. We have to be a little attentive to what is the proposed end use of that money. If he, however, he tells something or she tells something and uses it for another thing, that does not affect you. But if the purpose is better to know the purpose for which the money is being given. All these others are all related questions. तो गिफ्ट किसी को दिया या लोन किसी को दिया, उससे फर्क पड़ता है अपने को? नहीं नहीं, वो तो गिफ्ट हमने दे दिया तो उससे हमारा कोई रिश्ता, कोई ये नहीं होता। So it doesn't, like a loan or a gift, it doesn't make a difference. A loan is what you are going to get back. So if the person doesn't pay you back also, or if you gift it, वो वापस नहीं लेते। both are kind of similar effects. Only be mindful of what is the end use that the money is being asked for, and if that is misused, then that you are not responsible for that. और हम किसी सर्विस के लिए पैसा देते हैं तो वो क्या कर रहे हैं उस पैसे का, उससे हमको फर्क पड़ता है? नहीं, जो करता है वो भरता है। उससे हमने तो उनके भले काम के लिए दिया था, अगर वो बुरा काम करता है तो उसके ऊपर जाता है। So if we are paying money for any service or any commodity or buying something, and what that company or that person or that individual does with that money is entirely different. You are paid for the service or you are paid for the commodity, so it doesn't affect you. How harmful is sleep after meditation? Is it true that animals have the power to see? Okay, सोना, ध्यान के बाद सोना, वो कितना हार्मफुल है या कितना कैसा है? नहीं, ध्यान के बाद में फिर तुरंत नहीं सोना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ध्यान के बाद तुरंत सोने से फिर बुरे सपने भी गिरते हैं और फिर मन मलिन हो जाता है। तो इसीलिए उस समय हम कारोबार में लग जाना, या तो जो सवेरे 3 बजे उठ के बैठते हैं, 4 बजे उठ के बैठो या 5 बजे उठ के बैठो, लेकिन बैठने के बाद सोना नहीं चाहिए, नहीं तो मन के फिर मलिन हो जाता है। So it is not advisable to sleep after sitting for meditation. It is then better to get up a little later and sit for meditation. Instead of 3, you can get up at 4 or 5 and do meditation. But try to start your work or start your day immediately after the meditation. Because if we go to sleep immediately after meditation, then the dreams affect us in that sleep, and also the mind again gets impure. बाबा जी, ये एक सवाल है, ये किसी नाम पे है। बाबा जी, कैन यू शेयर द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय वामन हु लिव्ड इन बिदल विलेज? सोमनाथ बाबा जी को ढूंढने वो बॉम्बे गए थे, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वामन के बारे में। वो जब नागपंथ में थे, हाँ, बाबा सोमनाथ महाराज योगी होके जब बॉम्बे से निकले तो बॉम्बे समुद्र के बगल में पहाड़ी पे भजन करते थे ना, तो वहाँ एक मुर्दे को भी जलाया था उन्होंने।
और वहां धीरे धीरे प्रचार होने के बाद में लाइन लग गई। तब महाराज बोले अब हमारा भजन नहीं बनेगा, ये लोग अपने काम के लिए आ रहे हैं लोग। तो वहां से चोरी से रात रात को निकल गए और महाराष्ट्र में ऐसा जाके बीदाल, बीदाल एक गांव है, तो उधर नदी है, नदी के बाद गुफा है, मंदिर है, मंदिर का एक गुफा बना हुआ कोई योगी का, तो उसमें जाके बैठे। हाँ, तो वो बीदाल गांव नजदीक है। तो धीरे धीरे एक लड़का था 14 साल का, उसका उसका नाम वही पाटिल, वामन। हाँ वामन पाटिल। तो वो जो है देखा गाय चराते हुए कोई महात्मा बैठा है, वो बाहर निकले थे नहाने के लिए नदी में, तो देखा तो बातचीत किया, पहचान हो गई। बाबा जी को वो गन्ना ला के देता था उसको गन्ने का खेती था 4 एकड़, तो रोज 2 गन्ना काट के ला के देता था वो बेचारा। और कंद, वहां पे कंद होता है लाल वाला, कन्ना बोलते हैं यूपी में, वो भी ला के देता था, खाने को ला के देता। तो उससे पहचान थी, उसका प्रेम भाव देख के बाबा जी ने उसको नाम दिया था, माने वो प्राणायाम, ओम नमो शिवाय, वो पंचाक्षरी मंत्र दिया था उस समय। तो वो पहला सिख था बाबा जी का। और बाद में उसने, बाबा जी ने सावन सिंह महाराज से नाम दिलाया उसको तो उसकी कहानी बहुत है। So that is a very long story, but the short of it is Babaji used to do the practice of pranayam, and he had got a lot of mystical powers. He used to stay in the hills in Mumbai, and there his mystical powers started to be known to people. He even made a dead man alive, and as a result, then he used to get a queue of people wanting him to help them out, and he overnight then left that place because a lot of people were disturbing him. So he went and settled in a cave near the village Bidal in Maharashtra. That was near the riverside. There was a small cave of a earlier rishi or muni, and he sat there and he did his practice. So this boy Vaman Patil, his name was. He happened to see Babaji there when he was staying in that cave. So every day he would bring some 2 sugar canes, and he would bring some roots to eat. So kand, as we call it. So there that is grown for eating. So that or sugar cane he would bring to Babaji regularly, and Babaji was quite pleased with him. So he was the first initiate of Somnath Babaji in the Nag Panth. So in his pranayams, he was the first initiate. Later, when Babaji went in the northern parts of India and took initiation from Savansinghji Maharaj, this Vaman searched him out in Mumbai, and then Somnath Babaji took Vaman to Savansinghji Maharaj and got him initiated under Santvat. बहुत सारे सवाल हैं बाबा, स्टिल लॉट्स टू गो। 4 बज गए, क्या करना है, कैसे करना है? माने कभी शार्ट टाइम में ऐसा सत्संग के बाद में थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। आज के सत्संग के बाद नहीं, तो आज और कल में कल ऐसे ही 1 घंटा करें। नहीं, कल 1 घंटा के लिए ज्यादा प्रश्न चाहिए ना, अभी उतना प्रश्न तो और भी आएंगे, है काफी है बाबा जी तो कल ले लेंगे, नहीं दोपहर। There are still lots of questions, so we will continue with the 1 hour session tomorrow, or we may extend a little beyond satsang and do it. ठीक है, क्योंकि दूसरा टाइम
एक या दूसरा टाइम में गड़बड़ है। हाँ